ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಈಶ್ವರತ್ವ ವಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ. ஸ்ரீமத்தேவி பாகவத மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 5 அத்தியாயம் 28 சக்திகளின் பராக்கிரமம். ஓம் நம சண்டிகாயை. வியாசோவாச்ச கிருத்வா ஹாஸ்யம் ததோ தேவி தமுவாச்ச விஷாம்பதே மேக கம்பீரயா வாச்ச யுக்தியுக்தமிதம் வச்சக பூர்வமேயமயா प्रोक्तं மந்தாத்மன் கிம் விகத்தசே தூதஸ்யாக்ரேத யதா யோக்யம் வச்சனம் ஹிதசம்யுதம் சதிருஷோ மம ரூபேண பலேன விபவேன ச त्रिलोक्यं यति कोऽपि स्यात् तं पतिं प्रवृणोम्यहं ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च प्रतिज्ञा मे पुरा कृता तस्माद् युद्धस्व जित्वा मां विवाहं विधिवत् कुरु. त्वं वै तदाज्ञया प्राप्तः तस्य कार्यार्थसिद्धये सङ्ग्रामं कुरु पातालं गच्छ वा पतिना सह. व्यासोवाच श्रुत्वा वचनं देव्याः स दैत्यो अमर्षपूरितः मुमुच तरसा बाणान् सिंहस्योपरि दारुणान्. अम्बिका ताञ्चरान् वीक्ष्य गगने पन्नगोपमान् चिच्छेद सायकैस्तीक्ष्णैः लघुहस्ततया क्षणात् अन्यै जगानविशिकैः रक्तबीजं महासुरम्. अम्बिका चापनिर्मुक्तैः कर्णाकृष्टैः शिलाशितैः दिव्यपाणहतः पापो मूर्छामापरतोपरि पतिते रक्तबीजे तु हाहाकारो महानभूत्. सैनिकाश्चुक्रुषुः सर्वे हतास्मै. उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः. शुम्भोवाच निर्यान्तु दानवाः सर्वे काम्भोजा स्वबलैर्वृताः अन्ये अप्यतिबलाशूराः कालकेया विशेषतः. व्यासोवाच इत्याज्ञप्तं बलं सर्वं शुम्भेन च चतुर्विधं निर्जगाममदाविष्टं. देवी समरमण्डले तमागतं समालोक्य चण्डिका दानवं बलं गण्डानादं चकाराशु भीषणं भयदं मुहुः झास्वनं शङ्खनादं च चकार जगदम्बिका. तेन नादेन सा जाता काली विस्तारिता नना. श्रुत्वा तन्निन तं घोरं सिंहो दिव्याच्च वाहनं जगर्चसोऽपि बलवान्. सर्वे चिक्षिपुरस्त्राणि देवीं प्रति महाबलाः. तस्मिन्नेवायते युद्धे दारुणो लोमहर्षणे ब्रह्मादीनां च देवानां चण्डिकां ययुः. यस्य देवस्य यद्रूपं यदा भूषणवाहनं तादृशरूपास्तथा देव्यः प्रययो समाराङ्गणे. ब्रह्माणि वरटारूढा साक्षरुद्रस्कमण्डलो आगता ब्रह्मणशक्तिः ब्रह्माणीति प्रतिश्रुता. वैष्णवी गरुडारूढा शङ्खचक्रगदाधरा पद्महस्ता समायाता पीताम्बरविभूषिता. शाङ्करी तु वृषारूढ त्रिशूलवरधारिणी अर्धचन्द्रतरा देवी. तथा हि युद्धकामा समायाता कार्तिकेय स्वरूपिणी इंद्राणी सृष्टुवदना सुश्वेत गजवाहना वज्रहस्तादिरोषाढ्या संग्रामापि मुखी ययौवाराहि शुकराकारा प्रौढ प्रेतासना मदा. नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुयाम्या च महिषारूढा दण्डहस्ता भयप्रदा समायाता संग्रामे यमरूपा शुचिस्मिता. तथैव वारुणी शक्तिः कौबेरी च मदोत्कटा. एवं विधा तथाकारा ययुस्वस्वबलैर्वृताः आगतास्ता समालोक्य देवी मुदमवाप च. स्वस्था मुमुदिरे देवा दैत्या च भयम्. समागम्य च संग्रामे चण्डिकामित्युवाचः. हन्यन्तामसुरा शीघ्रं देवानां कार्यसिद्धये निशुम्भं चैव शुम्भं च. ये चान्ये दानवा स्थिताः हत्वा दैत्यबलं सर्वं
कृत्वा च निर्भयं जगत् स्वानि स्वानि च तृष्ण्यानि समागच्छन्तु शक्तयः देवयज्ञभुजः सन्तु ब्राह्मणाय जने रताः प्राणिनः सन्तु सन्तुष्टाः सर्वे स्थावरजङ्गमाः शमं यान्तु ततोत्पातः ईतयश्च तथा पुनः घनाकाले प्रवर्षन्तु वृषेर्बहुबला तथा व्यासोवाच एवं ब्रुवति देवेशे शङ्करे लोकशङ्करे चण्डिकाया शरीरात्तु निर्गता शक्तिर् घोररूपात पञ्चास्यम् इत्युवाच स्मितानना देवदेव व्रजाशु त्वं दैत्यानामधिपं प्रति दूतत्वं कुरु कामेरे ब्रूहि शुम्भं स्मराकुलं निशुम्भं च मदोत्सिक्तं वचनान् मम शङ्कर मुक्त्वा त्रिविट्टभं जात यूयं पातालमाशु वै देवा स्वर्गेषु कं यान्तु दुराशाश्वासनं शुभं प्राप्नोति त्रिदिवं स्थानं यज्ञभागां च देवताः जीविते च युष्माकं यदि स्यात् महत्तरा दर्हि गच्छत पातालं तरसा यत्र दानवाः अथवा बलमास्ताय युद्धे च मरणाय चेत् तथा गच्छन्तु तुभ्यन्तु मच्युवा पिशितेन वः व्यासोवाच तच्छ्रुत्वा गत्वाह दैत्यराजानं शुम्भं सदसि संस्थितं शिवोवाच राजन् दूतोऽहमं भायाः त्रिपुरान्तकरो हरः त्वत्सकाशमिह यातो हितं कर्तुं तवाखिलं त्यक्त्वा स्वर्गं तथा भूमिं यूयं गच्छत सत्वरं पातालं यत्र प्रह्लादो बलिश्च बलिनां वरः अथवा मरणे चेत् अर्हया गच्छत स्वरं सत्वरं संग्रामे वो हनिष्यामि सर्वानेवाहमाशु वै इत्युवाच महाराज्ञे युष्मत्कल्याणहेतवे व्यासोवाच इति दैत्यवरान् देवी वाक्यं पीयूषसन्निभं हितकृच्छ्रावयित्वा स प्रत्या तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शङ्करोक्तं तु दुष्करं युद्धाय निर्ययुः शीघ्रं दंशिता शस्त्रपाणयः तरसारणमागत्य चण्डिकां प्रति दानवाः निर्जग्नुश्च शरैः तीक्ष्णैः कर्णाकृष्टैः शिलाशितैः कालिकाशूलपातैस्तान् गदाशक्तिवितारितान् कुर्वन्ति विचरत्तत्र भक्षयन्ति च दानवान् कमण्डलुजलाक्षेप गतप्राणान् महाबलान् ब्रह्माणि चाकरोत्तत्र दानवान् समराङ्गणे महेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलेनादिरं हसा जगान दानवान् संख्ये पातयामास भूतले वैष्णवी चक्रपादेन गतापादेन दानवान् गतप्राणां चकाराशु चोतमां ऐन्द्री वज्रप्रहारेण पातयामास भूतले ऐरावत कराघात पीडितान् दैत्यपुङ्गवान् वाराही तुण्डघातेन दंष्ट्राग्रपादनेन च जगान क्रोधसंयुक्ता शतशो दैत्यदानवान् नारसिंहेनकैस्तीव्रैः दारितान् दैत्यपुङ्गवान् भक्षयन्ति चचाराजौ नानाद च मुहुर्मुहुः शिवदूति अट्टहासैः पातयामास भूतले तां चकाघात चामुण्डा कालिका च त्वरान्विता शंस्था च कौमारी कर्णाकृष्टैः शिलाशितैः निजगानरणे शत्रून् देवानां च हिताय वै वारुणे पाशसम्बद्धान् दैत्यान् समरमस्तके पादयामास तत् एवं मातृगणेन जावति वीर्यपराक्रमं मर्दितं दानवं सैन्यं पलायन परं ह्यभूत् बुम्भारवस्तु सुमहान् अभूत् तत्र फलार्णवे पुष्पवृष्टिं तदा देवाः चक्रुर्देव्या गणोपरि तच्छ्रुत्वा निनदं घोरं जयशब्दं च दानवाः रक्तबीजशुकोपाशु धृत्वा दैत्यान् पलायतान् गर्जमानां तदा देवान् वीक्ष्य दैत्यो महाबलः रक्तबीजस्तु तेजस्वी रणमप्याययौ तदा सायुधो रथसंविष्टः कुर्वज्ञा शब्दमद्भुतमाजगाम तथा देवीं क्रोधरक्ते क्षणोद्यतः इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रं संहितायां पञ्चमस्कन्धे रक्तबीजेन देव्या युद्धवर्णनं नाम अष्टाविंशोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।